first that what do we do in our GS Foundation course, what are the course features, to tell you that how your journey is going to be in the next 11 to 12 months. Secondly, we have invited our senior most teachers who are going to tell you their subject wise that what should be the approach, what should be the book list, what are the areas where you need to focus on. So I'll tell you briefly about our course, then our teachers, Ritesh sir is here, he'll talk about science and technology. Geography portion will be dealt by Akhilesh sir. Shubhra ma'am will talk about the polity and in the general discussion. Bhagwan sir will talk about ethics and governance, and then we have Rohit sir, who is going to talk about society. Obviously there are other subjects as well, but these are the main pillars of your preparation. We cannot cover all the teachers for all the subjects in this one particular session because of scarcity of time. However, if you have any doubts, subject specific doubts, you can let us know and we can conduct a different session, or we can connect you to our teachers. Now, starting from, before starting this, are you aware of the exam stages? Right, you know about the UPSC part, how many stages are there? According to you, which is the most crucial stage of this preparation? Settle down, settle down. Means, why means is the very crucial stage of your examination? Right, what do you feel, why we need to focus so much on our means examination? I'll show you something. So like, you know, there are two papers in your uh, preliminary exam. One is of the general studies, in which you have history, polity, geography, economics, science and tech, current affairs, and then there is paper 2, which is of the CSAT, comprising of the aptitude, certain mathematical things, and then your English reading comprehension that we call. Right, in your main stages you have these papers, along these compulsory papers along with the language. So these are the essay paper, GS1, GS2, GS3, GS4, and two papers of your optional. Right, so today we are going to talk about the GS portion. One thing that you can observe from here, that in this particular area, the final merit is decided by the scores, and in that your mains stage is counted. Now if you look at this portion, which area is dominating here? Your general studies. Right, four papers, clearly you have 1,000 marks in your hand for general studies. That is why we need to spend more time, more energy, and be more uh, you know sufficient and efficient when it comes to preparing general studies. So this is the top mark sheet of the mains stage of certain students. As you can see, in the year 2021, in the year 2018, 2017, these are the students who got all India rank 1 even when their interview marks was relatively less. Why? Because their mains score was higher in that particular year. This is how significant mains is. Once you have written those papers, GS, essay and optional, and you have written it with a good amount of knowledge, good amount of analytical skills, then even interview can be a secondary stage. Okay, so this is the reason I said that mains is very important, and obviously to reach the mains you'll have to first clear the prelims. Right, so that is why we have designed this course, general studies prelim cum means foundation course. It is a foundation course, so we start from the scratch. What should be the scratch? See, there cannot be the one starting point for all the students, so we start with the NCERTs but in online mode. Why? Because there are students who are from the humanities, there are students who are from the science. So for pre-foundation preparation, we provide them the access to NCERT course, so they can see the lectures, they can get the basic understanding of the terms, syllabus, etc. And then from very starting, we
start our general studies course that is available in both online offline mode. So if you take this general studies course, by default you will be getting the NCERT recorded lectures as well, right? So first and foremost, you need the experts to clear this examination, because obviously it is known as one of the toughest examination that we have. So that can happen with the right guidance only, and right guidance come from the right teachers, fine. The teachers who are academic, who belong to very good academic background, who have very good years of experience in guiding and making the students getting clear the examinations, fine. So obviously, like Shubhra ma'am, we have all other faculty members who are very well known in their respective subjects and who help the students in this manner that they clear the examination, fine. So as I mentioned today, Ritesh sir, Shubhra ma'am, uh, Rohit sir, Rashid sir, Bhagwan sir, they are going to discuss about the areas that you need to cover, how you need to cover, fine. Features, I'll revise it, but just for the ease, I'm telling you that first and foremost, we are going to cover everything. All the lectures will comprise of the GS prelim come main. So whatever there is defined in your syllabus, we are going to take that. We are going to conduct lecture for that. So you rest assured that you do not need to do anything extra. There's not going to be any portion which is going to be left from this syllabus of general studies. In this course, we'll cover everything. We are going to provide you the study material which is for the reference. We suggest students to be thorough with the class notes and standard material. This is going to be your primary mode of revision. However, just to ease, because if you start reading R.S. Sharma today for ancient history, you might face difficulty. So that is why we give the study material also for revision and for reference. So that, because since this is written in a lucid, थोड़ी सी easy language में है, then you can understand it, and then you can jump to the standard books, fine. We provide the general mentorship in the sense that every batch is allotted one mentor. When mentor will be there throughout your course, you can ask the sources to study, you can show your answers, you can discuss your strategy, and for every problem related to exam preparation, he or she is going to help you. We conduct periodic classes. I'll tell you. We have polity PYQ discussions by Shubhra ma'am. So polity in your course will be covered in two ways. One is going to be the basic, which Kumud sir is going to cover, and then there is going to be the advanced classes for polity, in which Shubhra Ranjan ma'am is going to cover the PYQs, previous year questions, because previous year questions and the syllabus, these are the best two sources, these are the best two indicators to understand what is important and what is needed for this exam preparation, fine. So these master classes ma'am is going to conduct it, fine. We also have current affairs classes तो एक बहुत बात की चीज है. We focus on the current affairs every day. So every day we ask the students to go through our the current affairs PDF which we provide, and there's an analysis. I'll show you how do we do it, fine. We also provide free access to NCERT course, as I mentioned, so that the students who are not feeling very confident in any of these subjects, they can go back and they can build their pre-foundation. Course duration is going to be 11 to 12 months, fine. There are going to be approximately 760 hours classes. Class duration is going to be 2.5 hours. The batch timing for this particular batch is going to be 5 p.m. to 7:30 p.m. It is going to be an evening batch, fine. We also have a morning batch, but it is going to start in May 1st or 2nd week. So your batch is going to start from 21st of April. So this is the study material I was referring to. If you have subscribed to the course, you will get this. Offline students will get it at the reception. Online students will get this from the courier. As I said, that in the mentorship, the mentor connects to the students on everyday basis. Why? Because most of the time what happens, students attend the lecture, they understand the story, but they forget. So to make them understand whether they have actually understood the topic or not, whether they are able to write an answer from it or not, we conduct these daily assignments, fine. So we give the questions to two prelims question, one mains PYQ, students write and we evaluate it.
So every day you will be updated with the lectures, revision and PYQs. ठीक है, आपको बस रेगुलरली कोर्स को ठीक से फॉलो करना है. Fine. And then we cover this weekly class test. So we conduct this test on Sundays, as the term says, weekly. So even in this test, what do? We conduct it in alternative basis. One Sunday we conduct objective test comprising of prelims questions, and one Sunday we conduct the subjective test. The idea is to make the student well versed with both the stages of examination, because many times it happens, कभी स्टूडेंट को प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे प्रॉब्लम होता है, कई बार स्टूडेंट्स को लिखने में आंसर प्रॉब्लम होती है. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट व्हाइल यू आर डूइंग योर फाउंडेशन क्लासेस, उसी टाइम पे आप लिखने की और पीवाईक्यू और प्रीलिम्स के क्वेश्चन और एमसीक्यूज सॉल्व करने की आप हैबिट डेवलप कर ले. देन ओनली एनी टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू आफ्टर कंडक्टिंग दी फाउंडेशन कोर्स. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाउंडेशन के साथ ही टेस्ट सीरीज ले लेते हैं. इससे क्या होता है, आप कभी भी जब एस्पिरेंट्स इंटरेक्ट करोगे तो दे आर नॉट एबल टू मैच द स्पीड ऑफ द टेस्ट सीरीज. व्हाई? क्योंकि फाउंडेशन में उन्होंने लिखना सीखा नहीं, कॉन्फिडेंस उन्हें आया नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी टेस्ट सीरीज अंडर यूटिलाइज्ड होती है, उनका पैसा वेस्ट होता है. दैट इज व्हाई वी फोकस ऑन कंडक्टिंग दीज क्लास टेस्ट, दीज डेली असाइनमेंट्स, दीज वीकली टेस्ट, ताकि स्टूडेंट्स के जो कोर्स है उसके दौरान ही वो एक्चुअल में उनका कॉन्फिडेंस, उनकी नॉलेज बेस सब इंक्रीज हुए. Right? So for current affairs, as I was referring to, like this is the PDF. So what do? We take the important articles of the newspaper, Hindu, and even PIB, the Press Information Bureau. Obviously, there are n number of current affairs sources, but these are the two primary which we must look into. So we take articles, we do the analysis, we provide the insight what an aspirant is supposed to know, is supposed to look into these articles. The idea is multi-purpose. One, that you should be able to retain what has happened, you should be able to understand what the news article is trying to say. Second, it is not to spoon feed you. Fine, because when you read the newspaper, you also develop a habit of summarizing something, you also develop the habit of reporting something, you also get an approach, you work on the vocabulary, you work on so many things, right? So rather than giving you a simple monthly current affairs magazine, this is what we do. We give it to you every day so that you can read it on your own, you can take our help, and then we conduct the weekly current affairs classes also, where this entire thing is summarized in 1 week. तो आप जब आज का न्यूज़पेपर एक बार खुद से पढ़ेंगे, ठीक, एक बार इससे आप देखोगे और फिर सेम चीज वो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में भी रिपीट होगी, you will learn these things. Fine. See, no matter what, how difficult exam is, the solution is only one: multiple revisions. We as a human, this is only in our hand. हम जितने अच्छे तरीके से फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस को, हमारी टेक्स्ट बुक्स को, हमारे सोर्सेस को पढ़ेंगे और उनको रिवाइज करेंगे, उतना अच्छा हमारा आउटपुट होगा. Fine. So this is what we do in the current affairs course plan. As you can see, the approximately 700 to 800 hours. I'll cut it down. So basically ये आपके subjects हैं: Indian polity, ancient medieval art and culture, geography, disaster management, modern Indian history, economy, post-independent world history, environment, ecology, science and technologies, ethics, Indian society, internal security, governance, and international relations. So we integrate these things and we cover these many subjects in these many hours. Fine. आपको इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखिए कि 11 से 12 महीने आपको लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में. ठीक है. व्हाई आई एम टेलिंग दिस आउट सो मेनी टाइम्स, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ जल्दबाजी नहीं, आपको ठीक से फाउंडेशन को बिल्ड करना होगा. फाउंडेशन, यू अंडरस्टैंड, बेस ऑफ एनी, राइट? इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, इट हैज टू बी स्पेशल. Right? So these are the things. Now I would like to invite Ritesh sir. He is going to talk about the how to start your preparation for science and technology. Okay, just give me one moment. Good evening. So my name is Ritesh Jaiswal and
I take care of science and technology, right? So, science and technology we'll talk about in very precise way, and we know that science and technology is integral part of this UPSC examination. It's there in prelims and in main examination also. So when we talk about prelims, then one thing is that number of questions that they ask in this prelims examination, then you will see that they are asking somewhere around 12 to 15 questions out of 100. So out of 100 questions, they are having 12 to 15. That's a sizable part. And these are the questions which are coming from direct science and technology, right? And if we add few more thing into it, let's say environment part. So many questions that is from environment section are linked to science and technology. I mean, there if you read that question will be coming from environment, but options would be also linked to science. So unless you have a very good scientific background, you won't be able to comprehend the questions and answers together. So some questions will be also added up into the science and technology, and also physical geography is one such part. Although question from physical geography area is coming little less, but then whatever questions are coming, that can also be linked to science and technology. So this will also add something into this particular 12 to 15, but we are taking the conservative figure of 12 to 15 question only. Now out of 100, 12 to 15 question is not less, right? Because you know that we struggle to cross this cutoff, and cutoff is below 50. Even if a person is well prepared, they find really difficult to cross the cutoff. In that way, this 12 to 15 question could be decisive. If you are from science background, this could be one strength for you. If you are not from science background, then you can make your strength. I mean, you should be above cutoff. You should be able to crack at least 7, 8 questions out of this 15 question. Even if you are able to get the 6 question out of it, it's okay. And it's not too hard to get the 6 question out of it, because science and technology is divided into two parts. One is basic concept, another is current development. Basic concepts are easy because it's a new one: biotech, nanotech, robotics. These are the new thing. And once we go through in the classroom, we'll cover up the basic concept. And then current affairs is something that you get it from magazines and newspaper, and will also help in that too. So crossing cutoff will not be a problem into this area. How to prepare about it, we'll talk about that too. Now when we come to talk about main examination, then you know that GS paper 3, this main science and technology is there, and there the number of questions they are asking is somewhere 2 to 4. So 2 to 4 maximum, 4 questions they have asked in a year, otherwise 2 question, 3 question, that's the average one, and you can get it. Now you can see that number of question is less in paper 3 of GA, but then because it's mains, so every single question is important, right? You cannot have a strategy of leaving a particular section, because leaving one question means you are losing some marks, and those marks would be decisive to get into the list, get a good rank or something like that. Here also we always try to limit science and technology in paper 3, but it's not like that. Paper 3 science and technology has been written, but there are some area like paper 1. So even in paper 1 where you get geography, so some area of geography is linked to science and technology, like remote sensing. So remote sensing is in a space tech, but it will link to land information system. Many section of the geographical, physical geography, environment section, that will be also linked to that. So few questions you can see in paper 1 that has scientific nature. So you are well versed with science and technology, then you will be able to get it. Let's say in geography we talk about agricultural resources also, and in biotech we talk about agriculture biotechnology. So this both will merge at one place, right? Again in paper 2 also we have Indian polity, and in Indian polity they might ask some question related to some bills and act. For example, we have
Indian Surrogacy Regulation Act 2021. The Surrogacy Regulation Act, that's a part of polity because it's an act we enacted it in Parliament. But because it is surrogacy, so surrogacy is a chapter that we talk about in biotech. Or let's say there is something called DNA Technology Regulation Bill. So this bill was there in Parliament, and what this bill is all about, why government is willing to pass this bill to convert into act, and what is DNA technology. So one part is in science and technology, another part is in policy making and law making. So you will have to merge both. If you merge both, then only you will get the entire value out of it. So lots many things. I mean, the entire nation is running on technology. Even in IR, we know that IR is so important, and in IR also lots many things is happening around your weapon systems, your nuclear weapon. So science and technology is now the new way, you can say like a new strategy where these all international relationships are being managed in that way. So that would be very helpful in that. Now let's talk about the syllabus part. The syllabus part that we are going to discuss in the mains syllabus, right? So in mains syllabus, if we could see, then there are chapters which are written like biotech, nanotech, right? Robotics. These are the chapters which are written. Space tech. These are the chapters which are written. IT and computers. So if you look very carefully in paper 3 of GS syllabus, you will find all these chapters name reflecting over there. Additionally, we add some more chapters. So we add something extra which are not part of the syllabus but we'll study, that is defense tech, right? Then we have nuclear tech. So these two technology we add and we prepare to the level of main examination, right? We know that from defense tech also they have asked question, from nuclear tech also they have asked question, and these are the area where they are asking question. But now mains would come only when you clear the prelims. What should be the syllabus of prelims? So if we talk about syllabus of prelims, then there is nothing, they have written just two words, general science. So this general science is written in prelims syllabus, which doesn't make any sense. There is no sense of this two word general science. And to make sense of this two word, you have to look into the past year question paper. So in UPSC, if you want to know what syllabus says, then syllabus and then past year question paper. You have to keep it parallelly. You will have to study side by side. You have to analyze side by side so that you can understand if something is written in syllabus, what does it mean? What kind of question they are asking? What kind of question they have asked from that particular part of the syllabus? So in general science, what happened that people will have a little more confusion about, and the confusion is general science means physics, chemistry, biology. And many people in UPSC preparation, they look at this two word general science and they end up preparing for it. They will start preparation in that way only, reading physics, chemistry, biology from NCERT books. But it won't help. I mean, physics, chemistry, biology from NCERT book is okay. It would help you to get a very good background, you know, to refresh all the scientific knowledge you had during 9th and 10th class. It will make a good premise. But then the questions are coming in prelims from these areas, right? So this is very important to understand that even in prelims, the questions are coming from all these chapters. If you look into the past year question paper, you can see the questions are coming from biotech, the questions are coming from nanotech, the questions are coming from space tech, IT and computers, defense and nuclear technology. So remember one thing, general science, three things are there: biology, physics, chemistry. But remember one thing, the number of questions from these areas are very less, extremely less. In the last 15 years, the number of questions from biology, it's hardly 4 or 5. In 15 years, they have asked only 5 questions from core biology. And they have asked this core biology question only during the corona period and after corona period. And those area is basically your virus immunity, because obviously corona and pandemic was very much in news. So they framed question around viruses.
They framed question around human health and immunity, and we consider it biology question. We can consider that. Physics and chemistry both put together, they have hardly asked 3 to 4 questions in last 15 years. Only 3 to 4 questions. So it means that these three areas good for study, good for basic background, good for refreshing all the basic concept of science and technology, and it is necessary. But don't expect questions coming from these areas. UPSC is all about applied application, applied section of the science and technology. So basically, when we prepare these chapters, I mean all these chapters when we prepare, then automatically our prelim syllabus will get prepared, right? So one thing that you should do as a serious aspirant, that don't rely on my word, just look into the syllabus, it's general science, and once you look into the past year question paper, you will understand what this syllabus means. The syllabus means nothing, syllabus means only, I mean, the basic concept of all these areas. So when we study this, then two things we take it from this part, and those areas are basic concept, basic concepts of science and technology, those area, and then application part, application. So application and basic concept. Let's say biotech, there would be basic concept like DNA, RNA, cell structure. These are the basic concepts. And application, where do we use biotechnology? Agriculture biotechnology, health biotechnology, biotechnology environment, right? So what we do in our class strategy, what we do, that we take just one chapter. Let's say I'll give you an example. So we just take one chapter like let's say robotics, and then any chapter that we take, we divide into 4 parts. The first part is always basic concept. The second part is application. Third part is issues and concern. And the last part we talk about India and world. Development in India, and we compare with the world level development. So just this is a tool for you to, if you want to explore any new chapter, any new topic of science and technology, do just one thing. Write the chapter name or topic name at the top and divide into 4 parts. Basic concepts. Basic concept in what is robotics, what are robot, what is definition of robot, what are the types of robot, what could be the different parts of the robot, right? So these all what kind of thing, the questions which are starting from what, that is basic concept, right? Application part, where do we use robot? Application of robot in industry, application of robot in healthcare, application of robot in defense sector, application of robot in agriculture, application of robot in disaster management, application of robot in space exploration. So you can think, I mean, if you read newspaper magazine, you will get all these robotic application enlisted. Make a list of it. Obviously, in the classroom, we do the thing for you. We give you the insight application, and then you will have a clear-cut idea that if new application would come after the class, also you can add there. Once you have application, then we come to issues and concern. We all know that robots will eat our job, right? So, I mean, robot eating job is just not, it cannot be just unemployment. It's not unemployment, it is job displacement. So, what is job displacement? That is being caused by the robot. If you say that robotic application will lead to unemployment, then my son is in 10th class and he does the same thing. He had the same concept. He will also come to that, Papa, if robots are there, it will eat our job. So, what is the difference between a 10th class and UPSC aspirant? So, the right term is job displacement. That's the entire economic concept. So, economic issues related to robot. That's the one particular area, right? Social aspect of the robot, ethical aspect of the robot, right? So, we'll recognize some issues and according to that particular area, we'll enlist it. Economic, socio-ethical, right? And we'll go. Defense issues with the robot. Robot should be used for the warfield or not. Robot killing human being, how justified it is, right? So, we'll talk about that too. And at the last, we'll come to this point. What India is doing in terms of development of robotics. What are the plans and policy in robotics and how we are doing in comparison with the world? What is our position relative? Now remember one thing,
we can divide any chapter into these four concepts: basic concept, application, issues and concern, India and world. Just I'll add one more thing into it. When we talk about basic concept, it's more about prelims and less about main examination. That is how we just treat one chapter so that it can be sufficient for prelims and it will cater the main part also. When we talk about application, prelims and mains are equal, right? When we talk about issues and concern, it is more about mains and less about prelims. When we talk about issues and India and world, it is again prelims and mains equal, because in prelims they can ask question on plans and policies of the particular development, but issues and concern are something which are more prominent in mains part, because that's analysis, analytical part. Application is equal, and then basic concepts very less important in mains, mostly it is important in prelims, right? So that is how we cover it. I mean, robotics and everything like a space tech, biotech and everything we cover in that way. So the strategy is understanding the entire thing. Then obviously we have to prepare for prelims, and then only we'll go for the main examination. But the preparation should be in a way that it is preparing you simultaneously for both prelims and mains. There is no separate way of preparation. If you prepare for prelims only, then it is a little difficult. But if you prepare for mains holistically, then prelims will be automatically be prepared with certain degree of orientation, right? So that is all, right? Because in the classroom we'll go for the lengthy discussion, and I had one class, I just wanted to meet you guys both online and offline. So I'll hand it over to the other teacher and they will enlighten you for the other things. Thank you. So good evening to all. My name is Akhilesh and I'm here for your geography and disaster management topic. So you all have this idea that what is the role of geography in your this particular exam. So in your prelims, every year, how many questions? 12 to 15 questions from geography is going to be asked. And not only this, you will find question from environment and ecology, which has been asked every year, almost 15 to 18 questions, and the base of environment and ecology is coming from geography, basically the climatology part. Okay, and in your mains examination in paper 1 as well as in paper 3, the cumulative marks which is got attributed by geography, disaster management and environment is going to be almost 180. So without doing this geography, it is quite impossible to crack this particular exam. Fine. So in geography, how we are going to prepare? So there are many ways and means, people are suggesting so many things. So every route is going to lead to the destination. But the thing is कि आपको वहां पे वर्कआउट करना है. You have to chalk out your own plan also. So there will be different ways and means, but ultimate thing is what? Hard work, and that too in a right direction. And to understand this right direction, you require a mentor, you require a teacher, a guide. That means help you to go at the right path. Fine. So for geography in our class, I suggest very few book, and that is what NCRT. First thing is NCRT from 6 to 12. Student usually ask, sir, should we go for NCRT? Many times I always suggest, yes, it is important, please go through it. Another book, that is what GC Leong, that is Certificate of Geography. Certificate of Geography, it is important. And the third thing is Atlas.
and apart from it, class notes, and few magazine, and that magazine is part of our responsibility for current affair part. Whatever is going to be important, we are going to put you in form of article or in form of question and answer. So every time we are going to update this current affair part. It may be Yojana or Kurukshet, or there is a magazine down to earth. Okay, if you are having time, although which is not there, but ठीक है, down to earth अगर आपके पास है तो you should go for a reading as a bedtime story. So this will complete your preparation. But the thing is, in NCERT, when you go for NCERT, especially 11th NCERT physical geography, so there are many things which has been written over here, but the positive of NCERT that there are many things which has been written, the negative is that it is not elaborative. बहुत ही short में चीजें दी हुई हैं. So you have to understand in length and breadth, because they are asking question not only onto the concept but utilization of this concept. Fine. So it requires understanding the concept properly, and because geography is a semi-science subject also, so a lot of things from science is also coming over there. So basic science की understanding भी होनी चाहिए. जैसे फर्ज कीजिए आपसे कहा जाए heat, temperature, is there any difference between heat and temperature? What is your take? Yes, heat is a form of energy while temperature is degree of hotness and coldness. So if I say that there is heat in polar region or not, in polar region, if I ask to you, there is a temperature is very low, let's say less than 0 degree centigrade. So is there heat or not? Heat होगी कि नहीं? Answer है हाँ होगी. Less heat will be there, more heat will be in equator, isn't it? And that's why the heating as well as cooling happen, degree of hotness and coldness. So these are the basic understanding of science, like heat transfer taking place. Somewhere we are going to use gravity, we are going to use circular motion. So a lot of things from the mechanics, especially the physics part, is going to be part of basic understanding of geography. अब जब मैं फिजिक्स बोल दूं तो हो सकता है ह्यूमैनिटीज के बच्चे थोड़े डर जाएं. So it's not a like science, ना? It's a basic science which you have already read in your class 10th level. But हाँ, उसको जानना, उसको सही तरीके से जानना बहुत जरूरी है. Is it okay? जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछूं, चलेगा? So if I ask this question to you that you are going to have two glasses, one glass is made up of wood and another glass is made up of, let's say, steel, and both are having water, both are open, okay, and both are kept outside at night. The night has a temperature, let's say 5 degrees centigrade. My question is, which water is warmer? Are these water have difference in temperature or same temperature? Which water is warmer? Are they are having same temperature? What is your take? Wood is having what? Warmer. Okay, fine. आपका कहना है कि ये जो पानी है, this water is going to have high temperature. Okay. You are from science? You are not from science. Okay, fine. Anyone from science background? No one is there. So will you appreciate? आर्ट्स वाले हो तो डेमोक्रेसी को सब्सटेंशिएट करो, लेकिन ये गलत है बच्चे. Both are at same temperature. Why? Because they are kept in a same temperature. This is the temperature. अब आप कहोगे सर ग्लास ये अगर छुएंगे तो ये तो गर्म लगेगी. तो wood is not a good conductor of heat. That's why the wood glass seems to be warmer as compared to the steel glass. So हाँ, वो टच करने में लगेगा क्योंकि it conducts heat from your hand to it. So there is a conduction of heat. That's why it is colder. Huh? Yes, that is experience. But the thing is, there is science. And the science is telling you, know it properly. And what is the proper thing? If the temperature, outside temperature is 5 degrees centigrade, so anything which is exposed to this environment will be at same temperature.
ऐसा नहीं है कि ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे वुड पे है तो यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो कितनी अच्छी बात हो, बताइए आप ही। पता चलता 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने केवल पानी रख देना, वाष्प बना लेनी और टारबाइन चला लेना, ऐसा नहीं होता है ना। सो दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड इट विल बी इनकलकेटेड इन योर माइंड, जस्ट आई हैव गिवन टू यू कि अंडरस्टैंड इट फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस। Okay, let me explain, ask one more question. This is water at temperature, let's say 27 degree centigrade. It's a place A. मान लो ये equator है. There is a water that is kept, let's say 48 degree centigrade. मान लो ये थार है, थार डेजर्ट जानते हैं ना. There is another bucket of water which is at 0 degree centigrade. Let's say it is pole. Or there is another bucket of water, let's say it is minus 69 degree centigrade. मान लो ये वर्खोयांस्क में रख दिया. मेरा सवाल है कि इवेपोरेशन, यू नो व्हाट इज इवेपोरेशन? ये सारी क्लाइमेटोलॉजी में आपको पढ़ना है और यहीं से कॉन्सेप्ट बनेंगे और उनके क्वेश्चंस बनते हैं. सो वेयर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, और इज देयर एनी प्लेस वेयर देयर विल बी नो इवेपोरेशन? वाष्पीकरण कहां हो रहा होगा? क्या हर जगह हो रहा होगा? ए, बी, सी और डी, या फिर ऐसी कोई जगह भी है जहां इवेपोरेशन नहीं भी हो रहा होगा? व्हाट इज योर टेक? हाँ, वेयर? In any case, there will be no evaporation. Why? There will be evaporation. Try to see 27 degree centigrade, this water will evaporate. It will be changed into vapor. Okay, so what is your take? 0 degree पे evaporation होगा? minus 69 पे evaporation होगा? हाँ, yes, it is frozen already. तो वहां evaporation होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वहां भी होगा. Evaporation takes place at all temperature. At high temperature, there will be higher rate of evaporation. At low temperature, there will be lower rate of evaporation. Even 0 degree centigrade, there will be evaporation. Minus में temperature चला जाए, evaporation होगा, क्योंकि evaporation is a surface phenomenon. It requires heat. When the heat is what? Added up, what happened? It will leave the surface. This is what the understanding you require in your geography, especially climatology. Then you can decode all these tricellular meridional circulation, cyclone ka banna, frontogenesis, frontolysis, isn't it? Rainfall, different type of rainfall, cloud formation and all. And then once you have the understanding of climatology, it is a cakewalk to solve the question which is posed by UPSC. You understand how the Indian monsoon is going to work, how it is giving you rainfall. So this will be discussed. Along with what is the specialty of this class is your mapping. So you are going to map not only with the help of your atlas, but inside the class I usually go for drawing the map, and you will also draw the map, and then we will locate the places. If I ask to you, what are the 13 major ports, where they are situated? So you will see the atlas, but you can see your notes and you can find it out. So because in the class only we are going to have this kind of mapping, and this will help you to understand the places. Like if I ask, sir, tell me the port in Gujarat, it's Kandla. Here it is Mumbai. Then there is Nhava Sheva, Jawaharlal Nehru, Nhava Sheva port. Then we have Marmugao, New Mangalore, Kochi, Tuticorin, Chennai, Ennore, Vishakhapatnam, Paradeep, Haldia, Port Blair. So once you do it on your own, by writing it in your notes, by making the map in the class, then is there any way to forget it? I don't think so. So ma'am aa gayi hai. So I'm going to stop here. So
you will find the guidance of ma'am. Thank you very much. Good evening, all of you. So you will be giving which attempt? 26? Okay. And have you started the preparation? Not. Okay. So right now, are you in college, or all of you are in college? And college is still going on? You're finished. Yours is, you are in Delhi University. When is exams going to finish? In May. Okay. We are starting batch when? Okay. So, do you understand what is to be done? आपको क्या समझ में आता है, क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, यूपीएससी का जो एग्जाम है, किस चीज का एग्जाम है? क्या क्या करना क्या होगा इसके लिए? इट इज अ एग्जाम ऑफ व्हाट? आपकी नजर में किस चीज का एग्जाम है? क्योंकि जो भी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि वो पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं रहे, मतलब एग्जाम ही नहीं समझ रहे, और बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो अननेसेसरी है, और ऐसी बहुत सी चीजें नहीं कर रहे जो नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि जब भी आपने स्टार्ट किया है ना, आपने कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया। ग्राउंड वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। ग्राउंड वर्क का मतलब ये है कि आपने कोई थिंकिंग नहीं की। अब कोई भी कंटेंट आ रहा है, पढ़ते चले जा रहे हैं, क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी करना है नहीं करना है। मैक्सिमम चीजों के आंसर्स जो है ना, वो अपने दिमाग से निकालने होते हैं। और एक कलेक्टर, मतलब जब गवर्नमेंट किसी को लेगी एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पे, हम किसी को एज्यूम करें कि इसको हमको अपॉइंट करना है, या पुलिस ऑफिसर या फॉरेन ऑफिसर आईएफएस में, तो सरकार क्या सोचेगी? क्या सरकार ये सोचती है कि ये कितना ज्यादा पढ़ता है? क्या सोचती है, बताइए? एडमिनिस्ट्रेशन में नॉलेज को कैसे यूज करेंगे वो भी नहीं है। पर्सन, हाउ इज द पर्सन? क्या जो अभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिकली उसको यूज करने वाले हैं? नहीं करने वाले हैं, है ना? क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को, आपको पता है? जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, आप खुद स्टार्ट कर रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम होती है? आप जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे वर्कशॉप में आए, क्या पर्पस था? टू नो द हाउ टू स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट करने में एक प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है कि जब आप किताब पढ़ते हो तो उससे हमको, वही बुक आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़नी है, वही यहां भी पढ़नी है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और हम लोग जब टीचिंग करते हैं उस समय ऐसे रियलाइज होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना, फर्स्ट 2-3 मंथ तक भी लोग अगर मोटिवेशन मेंटेन कर लें तो भी बड़ी बात है।
तो जब आप एग्जाम में फेल होते हो ना, कई लोग सिर्फ उस प्रोसीजर में हैं और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते। आप यूपीएससी के लिए आएंगे, आप कुछ क्लास में पढ़ेंगे, उससे पढ़ाई से तो फायदा ही होगा, लेकिन क्या आप इतना प्रोफेशनली चीजों को देखते हैं कि सिलेक्शन भी हो जाए? और उसकी समझ, सबसे पहली बात है, पर्सन हैज टू बी वेरी इंडिपेंडेंट थिंकर, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है, शहर में लेना है, फील्ड में लेना है। उस समय आपको कोई ट्रेनिंग मैनुअल देख के आपके सामने 10 टेररिस्ट खड़े हैं तो कोई मैनुअल देख के नहीं करना होगा। तो मैक्सिमम लोगों में मैंने क्या देखा? कॉन्फिडेंस का अभाव, इंडिपेंडेंट थिंकिंग का अभाव, छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाना, फोकस कहाँ पे रखना चाहिए। अभी भी इस क्लास में कई लोग, अगर मान लीजिए कोई, किसी को थोड़ा सा दोस्त लोगों में कोई दिक्कत हुई तो यूपीएससी एस्पिरेंट होने के बावजूद भी लोग लड़ाई पे उतरते है ना। तो ये और इस, क्योंकि आपका हर दिन, हर सेकंड प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए, एंड प्रिपरेशन हैज टू बी डन इन अ होलिस्टिक मैनर। कितना कंटेंट आपने पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, आपने कितना समझा, आप कितना रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अभी मैं ऊपर गई थी एनसीईआरटी के क्लास में, तो हार्डली 10% लोग भी टेस्ट नहीं लिखते। ठीक है, तो टेस्ट वो बच्चे क्यों नहीं लिख रहे हैं? जब आपने पढ़ा, आपका टेस्ट हो रहा है, तो कुछ लोगों ने टेस्ट नहीं लिखा। आप इतने स्टूडेंट्स हैं, उनके पास रीजन है टेस्ट नहीं लिखा, कि हमारे घर में कुछ था तो हमारा एग्जाम है। बट ये रीजन देने की आदत, आप अपने से नहीं भागोगे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप दिल्ली में आके क्लास करने का मकसद क्या है। और अनफॉर्चुनेटली फेकनेस बहुत ज्यादा है ना। ये चीज जो मैंने इस जनरेशन में देखी, एंड आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट, कि अगर कोई इंसान जेन्युइन है तो वो एग्जाम निकाल लेगा, लेकिन अगर आप खुद ही फेक हैं, आप जानते हैं, आप 1 घंटे का टेस्ट है, भले घर में शादी हो तो क्या 1 हफ्ते में टाइम नहीं मिलेगा? तो मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद दिल्ली में रहना है, घर से बाहर रहना है, क्या लॉजिक क्या है? और अगर आपका लॉजिक ये है कि मुझे आईएएस का एग्जाम देना है, तो ये चीज खुद से ही मोटिवेट करती। तो इसीलिए करने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन हम अगर कुछ समझ ही नहीं रहे तो, हालांकि पढ़ने में कोई नुकसान नहीं, मैं कहती हूँ कुछ तो अच्छा होता ही है बच्चे का, लेकिन जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा समझदारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप जानते हैं 11-12 लाख लोगों में 1000 भी नहीं, 800 का सिलेक्शन होना है विद रिजर्वेशन। तो किसका होगा? हर किसी का तो नहीं होगा। तो सीरियस वाले लोगों में और अच्छे वाले लोगों में बहुत फाइट है। मैंने दोनों तरीके के स्टूडेंट्स देखे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ और नहीं सिलेक्शन हुआ। तो मैं ये कहूंगी जिसका सिलेक्शन हुआ उसका कारण वो खुद है, और जिसका नहीं हुआ उसका कारण भी वो खुद है। क्योंकि
कोचिंग, ये सारी चीजें हम लोग सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट खुद नहीं करना चाहेगा, और अब आप लोग कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं कि उनको डरा के कुछ किया जाए, तो अगर इस एरिया में आप आ रहे हैं, पहले आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग रीजन होना चाहिए कि मैं क्यों आ रहा हूँ, और कितने मतलब कितना हद तक आप चाहते हैं। हमें तो लगता है माँ बाप ने भेज दिया, मतलब अगर किसी के अंदर ये है कि वो खुद आ रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक पढ़ ही रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं कि कॉरिडोर में अगर थोड़ी सी आवाज भी हो रही तो भी उनको दिक्कत है, और ऐसे भी बच्चे हैं जो बैग रख करके बाहर ही हैं। तो आपको पहले तो, अगर आपका समय है, ये करने आ रहे हैं, ट्राई टू बी सीरियस, एंड इट इज गोइंग टू बी अ रियल टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। पढ़ाई में भी बहुत लेवल होते हैं, एक इंफॉर्मेशन होता है, बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। तो इंफॉर्मेशन के बाद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के बाद ये एबिलिटी लाना कि फाइनली जो पढ़ाया जाएगा वो वर्ड बाय वर्ड नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन जो पढ़ाया जाएगा उसका बेस से एग्जाम में आएगा। तो पढ़ने के बाद उस एरिया का इंडिपेंडेंट थिंकिंग करके हम वो क्वेश्चन, व्हाट वी फोकस, स्पेसिफिकली व्हाट आई फोकस, देयर इज नो लिमिट कि आप कितना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, but you look at something and you develop capacity to think. Thinking in a critical manner is very important. हर क्वेश्चन में ये लिखा रहता है क्रिटिकली एग्जामिन। तो पहली चीज है, स्टूडेंट्स आते हैं लेकिन या तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है या कितना कंपटीशन है। दूसरी चीज है, मोटिवेशन उस समय तक रहता नहीं, और इन चीजों को जो कॉन्कर कर लेता है, क्योंकि एक तरीके से कंपटीशन बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि वो जो स्मॉल परसेंटेज है जो समझता है, वहां पे बड़ी नेक टू नेक फाइट है, लेकिन जो एक बहुत संख्या में लोग हैं जो कुछ समझ नहीं रहे हैं, तो वो एक तरीके से वो कोई कंपटीशन वहां पे है नहीं। नेक्स्ट है पढ़ाई करने का तरीका। कई लोग दोनों एक्सट्रीम में जाते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं जितने की जरूरत नहीं, मतलब उनको लगता है कि कोई फ्रेंड आया तो हमने टाइम वेस्ट कर दिया, है ना, लेकिन ऐसी सोच से वो अपने माइंड को परेशान करते हैं। और कई लोग तो बिल्कुल सीरियस नहीं, आप अगर रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करोगे, क्लास में आना, ये जब से ऑनलाइन हाइब्रिड हो गया है ना, और बड़ी समस्या आ गई। मैं ये मान ही नहीं सकती कि ऑनलाइन कैन कंपनसेट ऑफलाइन। ऑफलाइन आना, क्लास में आना रेगुलरली, लोगों को लगता है क्लास में आ रहे, हमारा आने जाने का टाइम वेस्ट हो रहा है, वो ऐसा है नहीं। एंड यू हैव टू बी, जब तक आप सोशली स्मार्ट नहीं है, आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती, मतलब खुद को धोखा नहीं दो। अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास, यूपीएससी का प्रिपरेशन के भी कई लेयर्स होते हैं। पहले लेयर में आपको जानकारी, ये समझ आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट्स के स्कोप क्या है। फर्स्ट स्टेप में क्लास इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड सेल्फ स्टडी और द मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन बिना गाइडेंस के करना बेकार है वो।
तो क्लास में आना टाइम का वेस्टेज नहीं है, एक्चुअली टाइम का यूसेज है। आप जब मेट्रो में भी आ रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही तो एथिक्स की केस स्टडीज है। तो ये तो हमारा पर्सपेक्टिव है। आप और क्वालिटेटिव स्टडी करना, कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें, मतलब पर्सनालिटी का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ क्या क्या होगा, आपका क्लास होगा, टीचर्स देखे, बाकी और भी है सब, अभी हिस्ट्री। नेक्स्ट है 4-5 कोर एरियाज को पढ़ना है। सबसे अहम एरिया पॉलिटी ही है। क्यों है? क्योंकि अगर आप इकोनॉमी भी पढ़ते हो ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही गाइड करता है आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज को। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? इकोनॉमी से स्टार्ट करिए, एक पॉलिटी से करिए, एक बेसिक बुक से करिए। बुक्स बहुत है, जितने स्टूडेंट हैं उतने पब्लिशर हैं, नया नया मटेरियल है, तो ऐसे में बेसिक्स को जो पकड़ के रखता है, वरना वो लॉस्ट हो जाएगा। तो बेसिक क्या है? बेसिक है, जैसे आप पॉलिटी में मान लीजिए लक्ष्मीकांत की बुक आपको लगती, या डीडी बासु की लगती, कोई एक बुक। कंटेंट कम रखना है, जो भी कंटेंट है उसके साथ कॉन्फिडेंट रहना है, और किसी भी इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, इंक्लूडिंग अपना इंस्टीट्यूट, उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पे ध्यान देना है, कभी भी शॉर्टकट्स पे ध्यान नहीं देना है। जो चीज करने में मुश्किल लगे वही करो, ठीक है? बच्चे स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कब? जब आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ के खत्म कर दी हो और आपको रिवीजन हो और आप स्पेक्ट्रम खोलते ही ये जान ले कि यही पढ़ना था। लेकिन केवल फैक्ट्स, इवन प्रीलिम्स का क्वेश्चन केवल फैक्ट्स पर नहीं बेस्ड होता, फैक्ट्स के पीछे भी कॉन्सेप्ट होता है। और एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, एक विपिन चंद्रा नाम के एक ऑथर ने लिखी, और एक गाइड बुक है जिसमें ऑथर का नाम ही नहीं है, तो डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? गांधी किसी ने पढ़ाया, प्लेटो मैंने पढ़ाया, किसी और ने पढ़ाया, क्या सेम होगा वो? इज दैट क्लियर? तो मेरा यही कहना है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। और क्या गलती लोग करते हैं, मैं आज उसी के ऊपर डिस्कशन करती हूँ। एडमिशन लिया, जीएस में लिया, ऑप्शनल में लिया, क्लासेस खत्म नहीं हुए, बस एग्जाम फॉर्म आया, एग्जाम दे रहे हैं। आधी अधूरी प्रोसेस। आप यहां आएंगे, एडमिशन लेंगे और एग्जाम का फॉर्म भर देंगे तो सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। समटाइम्स पेरेंट्स आर ऑल्सो इम्पेशेंट, बट आई फील कि ऐसा है क्यों? यू अंडरस्टैंड कि हाफ हार्टेड या हाफ बेक्ड केक से नहीं होता। आपको सबसे पहले हड़बड़ी नहीं करनी, सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना है। आपके क्लास की प्रोसेस, केवल एक क्लास की प्रोसेस खत्म हो गई तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं, अपने यहाँ ही कई ऐसे स्टूडेंट थे, मान लो अनमोल शेर सिंह बेदी, वो मेरे क्लास में तब था जब क्लास चल रहा था और एग्जाम दे रहा था। अनन्या दास, क्लास चल रही थी, एग्जाम, लेकिन ऐसे लोग कम है ना, हम वो एक्सेप्शन को नॉर्म नहीं बना सकते। एक बार क्लास होने के बाद खुद की किताबों के साथ बैठना पड़ेगा,
जितने भी नोट्स हैं उनको अपने अनुसार ओरिएंट करना पड़ेगा, और नोट्स के भी कई स्टेजेस होते हैं। आज ही आप आज मेरे क्लास से आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो इतना सारा वो बनेगा, फिर जैसे जैसे समझ आएगी तो और बेहतर बनेगा। दोबारा पढ़ोगे, आज तुमने पॉलिटी पढ़ा, थोड़े दिन बाद इकोनॉमी भी पढ़ लिया, जब इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों पढ़ लिया और फिर पॉलिटी पढ़ोगे तो फिर कुछ और समझ में आएगा। आपने ऐसे रियलाइज किया होगा कि एक ही बुक को जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो उसमें कुछ और दिखने लगता है। कारण क्या है? क्योंकि हमारा नॉलेज बढ़ जाता है। तो कई राउंड में पढ़ना है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? एनसीईआरटी से करनी है। यहाँ पर जो जनरल स्टडीज का कोर्स है हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। एनसीईआरटी will always be the base to make the questions. एनसीईआरटी होगा, आपका क्लास होगा, इन्होंने बताया होगा। क्लास के बाद डेली बेसिस पर एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे आपका ये रिटेन हो जाए आपने क्या किया है। लेकिन हम पढ़ते फिर भूलते, पढ़ते हैं फिर भूलते हैं। एक वीकली टेस्ट का प्रावधान है, वेयर मेंस, प्रीलिम्स, और शुरू से ही बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर को पढ़ना। आजकल के स्टूडेंट्स में है कि मैगजीन्स वो पढ़ते हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं मैगजीन्स? क्या मिल जाता है बताएं? टाइम बच जाता है। टाइम बच नहीं जाता है, टाइम किल हो जाता है। क्योंकि जब आप पेपर पढ़ रहे होते और आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती वो मिस कर दी आपने। ठीक है, अब मैंने ये रियलाइज किया कि टुवर्ड्स द एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो करंट अफेयर्स खत्म नहीं कर पाते। यहाँ पे एक लेवल पे जब टीचर पढ़ा देते हैं, कई लेवल पे प्रिपरेशन करनी होती है, तो उसके बाद जब तक आपने PYQs नहीं किए, PYQ नहीं किए का मतलब कैसे भी कर ले नहीं होता। PYQ जिस ढंग से करना जिससे कि दिमाग में ये समझ में आ जाए कि क्या पूछा जाता है और किस ढंग से पूछा जाता है, और उस ढंग से चीजों को समझना होता है। आई विल बी फोकसिंग ऑन डेवलपिंग योर राइटिंग स्किल। तो PYQ, राइटिंग और ऐसे, क्योंकि ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी तुम टेक्निकली तो बताओगे कि क्या क्या होता है। मेरे से कुछ पूछना है आपको? हम लोगों ने अभी एक प्रैक्टिस स्टार्ट की है कि वी वांट आवर स्टूडेंट मेक देयर ओन मैगजीन ऑफ करंट अफेयर्स। तो हम क्या करते, डेली न्यूज़पेपर के जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें हैं हम उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, हम उनको थीम दे रहे हैं। एंड वी आर इनकरेजिंग देम कि लुक फॉर इट एंड मेक देयर योर ओन मैगजीन। क्योंकि जब आप अपने से कुछ करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखते हो, आप उसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हो। तो वी कीप ऑन डूइंग कांस्टेंट इनोवेशन, you will get very good support of mentors, teachers, and यहाँ पे जितना because we go for lot of involvement with the students। ठीक है, तो ये आप अब कुछ ऐसे पूछना चाहते हैं? नहीं तो हिस्ट्री के लिए कुछ है ना, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन? सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। और आइडियली 9th या 10th से स्टार्ट करिए, 5th 6th से कोई जरूरत नहीं, आपके पास इतना टाइम है नहीं, है ना। तो मैं तो कहती हूँ कि 10th या 11th से ही स्टार्ट करिए, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज नहीं।
पॉलिटी तो पॉलिटी, हम लोग जो एनसीईआरटी करते हैं ना, तो यहाँ पे एनसीईआरटी होता है और वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से होता है। आप ये समझिए टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो और हमारे पास एसेंशियल करने का ही समय नहीं है, तो अननेसेसरी का तो बिल्कुल ही नहीं समय है ना। तो हमेशा एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ काम करिए और ऐसी जगह पढ़िए जहां पर लोग पर्सनली इन्वॉल्व, ठीक है, बुला लेते। और कुछ देखिए, यूपीएससी करना बहुत आसान है क्योंकि मेजॉरिटी को पता ही नहीं है। नेक्स्ट, मैंने ये ऐसा अनुभव किया है, आई हैव रियलाइज दैट, कि लोगों को ये भी उतना नहीं पता है कि आईएएस क्यों बनना है। हाँ बताएं। पर्सन, व्यक्ति, पर्सनैलिटी। तो आप हैं या नहीं हैं, मेरी ऐसी मान्यता है कि लाइफ में इंसान कुछ भी करता है ना, उसके संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर संस्कार इज योर वैल्यू सिस्टम। हर इंसान कुछ भी कर सकता है, नोबडी इज बॉर्न। जितना नेचर का रोल है ना, उतना नर्चर का भी रोल है। तो एक ही चीज इंसान में चाहिए कि उसको कितना शिद्दत से वो गोल तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम वो पहले, मतलब तुम्हें और कुछ नहीं, मैं अपने स्टूडेंट से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती अदर देन हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर द स्टूडेंट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। क्योंकि अगर वो चीज है तो अपने आप ही आपके अंदर मोटिवेशन रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रस्ट फैक्टर। टीचर और स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। एज अ टीचर मेरा अपना एक विजन है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स टू फॉलो एंड हैव अ ट्रस्ट ऑन दैट। तो अगर जो अपना इंडियन सिस्टम है ना, अगर आपको टीचर पे ट्रस्ट लाना बहुत इंपॉर्टेंट। आप किसी और पे तभी ट्रस्ट कर पाते हो जब आप खुद पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है। तो सेकंड चीज है ट्रस्ट करना, और थर्ड है थीम कि हम अपने आप को बेटर करेंगे और हमारा हर अगला रिस्पॉन्स हमारे पिछले रिस्पॉन्स से बेटर होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए मेरा फॉर्मूला ये है, कीप इट सिंपल। अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ना है, लेकिन एक जो बहुत सब्सटेंटिव चीजें, क्षमता का विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट होते देखा है, जो बिल्कुल रॉ है, जो बिल्कुल गांव से उठ के आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, और उनको अब ऐसे लग रहा है कि जो मैम हमें कुछ नहीं पता है, मैम के सहारे आगे चले जाना है। तो यहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट जिनसे आप जैसे पूछ रहे हैं, अगर हम उसको देखें, हम कहेंगे इसका होना मुश्किल है, लेकिन उनका हुआ है। और जिसको देख के लग रहा है बहुत स्मार्ट हाई फाई, उसका ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये आईआईटी एग्जाम नहीं है या आईआईएम एग्जाम नहीं है, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको एक ऑफिसर होने के कारण पीपल का मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो आप कैसे सोसाइटी में बिहेव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो स्टूडेंट का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और एक अलग व्यक्ति चाहिए, ठीक है। हजारों में एक ही इंसान निकलता है ना, तो उसकी सोच अलग है कि नहीं है, एंड रेडी टू फॉलो। आप क्या फॉलो करते हो जो आपको बताया गया,
क्योंकि आपके पास अपना उतना एक्सपोजर एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है। लेकिन आपको जो प्रोसेस, कई लोग बीच में अपना दिमाग लगाने लगते हैं, उनसे जिस चीज पे दिमाग लगाने के लिए कहा जाता है वहां नहीं लगाते हैं। एक बार कर लिया ना, तब मतलब ट्रस्ट मेंटेन जिसने किया उसका दिमाग शांत रहता है, और जिसका दिमाग शांत रहता है वही कुछ कर पाता है। तो यू हैव टू बी अ डिफरेंट पर्सन, नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। सर को बुलाया। और कुछ बाकी भी कभी और भी पूछना है आप आ सकते हो, ठीक है। जो जितना जमीनी व्यक्ति है ना उसके चांसेस उतने ज्यादा है, क्योंकि ऐसे लोग ही चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, ना ज्यादा हीरो चाहिए ना ज्यादा स्मार्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन में जाके ढल जाए, प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। ओके, थैंक यू। So, good evening to all of you. So, I'm Rashid and I won't take much time. So, I'm here to discuss सारी चीजें तो मैम ने बताई दी आप लोगों को, क्लियर। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके बैच में मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊँगा, पूरा सेक्शन। देखिए मैम ने, मैं सुन रहा था बाहर जब मैम कह रही थी, मैम ने सारी बात आपको बताई है कि पढ़ाई कैसे करनी है, कॉन्फिडेंस कैसे रखना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है, मटेरियल्स जो कोचिंग में मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको बेसिक टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। देखिए मैं इसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए बोलूंगा, अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं आपसे, क्लियर। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एक बहुत महत्वपूर्ण मॉड्यूल है आपके एग्जामिनेशन के लिए, एंड इस एक मॉड्यूल से यू गेट क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स आल्सो और मेंस आल्सो, क्लियर। इस मॉड्यूल में भी आपको मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बेसिक कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट और क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्लियर। नॉर्मली हम हिस्ट्री और इतिहास को ऐसे देखते हैं कि हमें लगता है कि बहुत कुछ याद करना है, ठीक है। आप लोग भी ये समझते होंगे, बहुत लोगों ने कहा भी होगा आपसे, क्लियर, कि बहुत डेट्स याद करने होंगे, बहुत नाम याद करने होंगे, बहुत चीजें याद करनी होगी। मैं आपको फिर बता दूं जैसा मैम कह रही थी, क्लियर। You have to focus more on three important things in history, क्लियर। सबसे पहले चीज तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी होगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, क्लियर, अगर मैं बात करूं कि एक टॉपिक की हिस्ट्री में, जैसे फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, जैसे हिंदी में हम सामंतवाद कहते हैं, क्लियर। इफ यू टॉक अबाउट दिस टर्म दैट इज नोन एज फ्यूडलिज्म, क्लियर। अगर इस टर्म की बात करो फ्यूडलिज्म की, तो आपको सबसे पहले क्या जानना, क्लियर। उदाहरण के तौर पर समझाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई इसका कंसेप्ट क्या है, क्लियर। कंसेप्ट क्यों फ्यूडलिज्म आया है, क्लियर। फ्यूडलिज्म लैंड ग्रांट से शुरू हुआ, रूलर्स ने लैंड ग्रांट्स दिया ब्राह्मण्स को, ब्राह्मण्स began to have major control over the land areas, agriculture। ये फ्यूडलिज्म कब आता है? आपसे अपने आप से भी सवाल पूछिए, केवल रोट लर्निंग नहीं करना है आपको। आजकल क्या दिक्कत है मैं आपको बताऊं, क्लियर, बहुत प्रैक्टिकली। हमारे पास डिजिटल मीडियम बहुत आ गए, हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमने चैट जीपीटी किया, हमने गूगल किया, हमने बोला चलो देख लेते हैं, कर लिया। आप किताब पढ़ने की आदत डालिए, एज मैम वाज टेलिंग यू, क्लियर। आप समझिए कि बेसिकली फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट रियल सेंस में क्या है। जरूरी नहीं है कि चैट जीपीटी में या गूगल में आप देख रहे हैं तो सारी चीज सही है, क्लियर। 100% एक्यूरेसी नहीं है उन चीजों की, क्लियर। और एक बार कंसेप्चुअली अगर आपको गलत चीज दिमाग में आ गई तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट और वेरी डिफिकल्ट टू डिलीट दैट, क्लियर। इसलिए पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग एज ऑफ नाउ द प्रिपरेशन, क्लियर। स्पीड भले स्लो हो, क्लियर, डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्लियर। भले ही आप एक टॉपिक को ही एक दिन में कंप्लीट करते हैं, लेकिन एक टॉपिक को सही तरीके से करते हैं, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, rather than completing 8 topics in a single day। और आप मानसिक रूप से खुश हो गए साइकोलॉजिकली that you have covered 8 topics in a single day, you are much ahead of the other candidates। नहीं, आपको ये फिर करना पड़ेगा और उसमें ज्यादा समय लगेगा, क्लियर। rather than यहां पर कहने का कि एक टॉपिक को अगर आप उठाते हैं तो उसमें पूरा समय दीजिए, अपनी पूरी एकाग्रता दीजिए, यू गिव योर कंप्लीट कंसंट्रेशन, देन कंप्लीट द टॉपिक, जिससे आपको लगे कि सचमुच आपको ये चीजें समझ में आई है। वो चैट जीपीटी, गूगल से नहीं होती है, क्लियर।
बुक्स पढ़िए। जैसे मान लीजिए अगर हम फ्यूडलिज्म की बात करें तो हम देखेंगे अपनी क्लास में वी विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर आर एस शर्मा। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है फ्यूडलिज्म पे। कोई भी चीज करेगा फ्यूडलिज्म में, एनीवन विल राइट, ही विल राइट अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा। तो आप rather than why don't you study about आर एस शर्मा, उनकी कंसेप्ट जो फ्यूडलिज्म पे है, कैसे वो फ्यूडलिज्म को बताते हैं कि इज डिफरेंट इन इंडिया, फ्यूडलिज्म वाज डिफरेंट इन यूरोप, क्या कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं फ्यूडलिज्म को लेके। माय पॉइंट इज क्लियर, रीड द बेसिक टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, ठीक है, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, ठीक है। नॉर्मली आजकल लोग क्या है, डिजिटल मीडियम आने के बाद, फोन आने के बाद आपको लगता है कुछ भी नहीं आ रहा है, चलो टाइप करके देख लेते हैं आ जाएगा। लेकिन बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, there is no guarantee of accuracy in those things, clear। ट्रेडिशनल किताबें जो लिख दी गई हैं उसमें रियल विजडम है, उसमें रियल नॉलेज है, आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्लियर। आप जब इस कंसेप्ट को समझते हैं, भले आपको समय लगता है, इफ यू टेक मोर टाइम, गो थ्रू द फ्यूडलिज्म कंसेप्ट डीपली, क्लियर। और जब आप कंसेप्ट समझते हैं, देन दूसरी चीज, क्लियर, आपने कंसेप्ट समझ लिया, क्लियर, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, क्लियर। अब दूसरी चीज जो आपको समझनी है इस टॉपिक पे, दैट व्हाट इज द कंटेक्स्ट। हिस्ट्री में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्लियर। Feudalism started from late ancient India when land grants started by the Guptas, clear। Feudalism reached its peaks in early medieval India till the arrival of Turks। आप अपने मन से एक सवाल पूछिए कि ऐसा क्या रहा होगा कि फ्यूडलिज्म इसी समय उभर के आया, और ऐसा क्या हुआ कि फ्यूडलिज्म came to an end with the arrival of Turks in India। कंटेक्स्ट को समझिए। नॉर्मली हिस्ट्री बिकम्स वेरी बोरिंग, वेरी मोनोटोनस व्हेन वी ट्राई टू मग अप द थिंग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज समथिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, इट विल रिमेन इनटू योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्लियर। सो पहले इस कंटेक्स्ट को भी समझिए। सो आफ्टर कंसेप्ट ऑफ कंटेक्स्ट समझिए, क्लियर। Why we started in Gupta period? Guptas were basically Vaishya in origin. They were not Kshatriyas. Clear? Ruling authority was with Kshatriyas. Clear? जब वो रूलिंग क्लास बने तो उनको लगा कि अपनी पोजीशन लेजिटिमाइज करने के लिए दे नीड द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स, क्लियर। इवन ब्राह्मण्स ओनली कैन लेजिटिमाइज द पोजीशन। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण्स को अपीस करने के लिए, खुश करने के लिए, दे स्टार्टेड गिविंग लैंड ग्रांट्स, जिसको कहते हैं ब्रह्मदेव, समथिंग टू बी गिवन टू ब्राह्मण्स, क्लियर। जब ब्राह्मण्स को लैंड राइट्स दिया गया विद फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, दे बिकेम द ओनर्स ऑफ द लैंड, दे बिगन टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, और यहीं से सामंतवाद या फ्यूडलिज्म की स्टार्ट होती है, क्लियर। यहां से सेंट्रल अथॉरिटी वीक होने लगता है और रीजनल पावर स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, सामंत स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, ब्राह्मण्स, क्लियर। सो एक फीचर आपको समझ में आएगा कि फ्यूडलिज्म में सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो जाती है, रीजनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, क्लियर, कि फीचर्स क्या है फ्यूडलिज्म की, क्लियर। जब तक आप कंटेक्स्ट नहीं समझेंगे, क्लियर, आप केवल फैक्ट्स याद कर लेंगे तो यू वोंट बी एबल टू करेक्ट दैट क्वेश्चन देयर, क्लियर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, क्लियर। कंटेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री। अब मैं बिलीव मी, जो लोग टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ते हैं वो कंटेक्स्ट को ही बाईपास कर जाते हैं, क्लियर, और वो सीधे जंप करते हैं किस चीज पे, जिसमें मैं लास्ट में आता हूं, क्लियर, वो जंप कर जाते हैं सीधे कंटेंट पे, क्लियर, और कंटेंट कम्स इन द लास्ट, क्लियर। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कंटेक्स्ट, क्लियर, एंड लास्ट कम्स द कंटेंट पार्ट। लेकिन हिस्ट्री में हमारी गलती, हमारा अप्रोच क्या है, क्लियर। हमारा अप्रोच ये है, हम कंटेंट पे भाग जाते हैं, क्लियर। आरएस फ्यूडलिज्म किस रूलर के टाइम पे आया, फ्यूडलिज्म से क्या हुआ, ये नहीं, हम इस चीज को समझते नहीं कि ओवरऑल कंटेक्स्ट क्या है, क्या उस समय स्थिति थी जिसे फ्यूडलिज्म को लाना पड़ा, क्या ऐसी स्थिति हुई फ्यूडलिज्म खत्म हो गया 13th सेंचुरी में, टर्किश वॉरियर्स आए, they wanted to have all powers in their own hands, clear। उन्होंने कहा कि no fiscal rights to given to any intermediaries, ब्राह्मण्स को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, clear। they confined all the powers in their own hand, clear। जो ऑफिसर्स भी उन्होंने रिक्रूट किए, they used to transfer those officers regularly from one place to another place। इससे क्या हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग हो गई, रीजनल पावर्स वीक हो गए, फ्यूडलिज्म कंप्लीटली गॉट ओवर, क्लियर। अब जब आप इसको समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि भाई दिल्ली सुल्तान का अप्रोच क्या था रूल करने का, गुप्ता रूलर्स का एंशिएंट इंडिया में अप्रोच क्या था, हर्षवर्धन का क्या अप्रोच था, देन यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक ओवरऑल, क्लियर। इस द पॉइंट यहां पे ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, या तो ये चीज आप खुद कर ले, क्लियर, otherwise apart from reading textbooks you need the expert guidance of a person who are experienced in the field, clear, जिन्होंने बहुत सालों से इस चीज पर काम किया हुआ है। I had been teaching this subject for more than 15-16 years, clear।
सो हमें पता है कि स्टूडेंट कहाँ पर दिक्कत आती है, उनको कहाँ पे कंटेक्स्ट नहीं समझ में आता है, उनको क्या चीजें में दिक्कत आती है उनको। अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे तो आप हिस्ट्री में कभी इंटरेस्ट नहीं ला सकते, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में नहीं ला सकते। क्लियर? सो ऑलवेज ट्राई टू एम्फसाइज ऑन कंसेप्ट एंड कंटेक्स्ट, लास्ट कम्स द कंटेंट पार्ट। क्लियर? हमारी दिक्कत है हम सीधा कंटेंट के पीछे भाग जाते हैं। क्लियर? फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता दूं, बैटल ऑफ प्लासी की बात करें, बहुत पॉपुलर बैटल है। क्लियर? मैं ये पूछूं कि भाई आप बैटल ऑफ प्लासी करेंगे तो सबसे पहले आपका अप्रोच क्या होगा? कब हुआ था ये बैटल, किसके किसके बीच हुआ था बैटल, कहां हुआ था बैटल, क्या परिणाम थे बैटल के? आपने कहा, आपने कभी ये सवाल पूछा ये बैटल बंगाल में ही क्यों हुआ, ये बैटल 1757 में ही क्यों हुआ, ये बैटल अब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट ही क्यों हुआ? आप ये पूछिए जब पढ़िए। क्लियर? कंटेम्पलेट कीजिए। क्लियर? तो आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। क्लियर? कंटेक्स्ट का मतलब है बैकग्राउंड। क्लियर? ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आप सिर्फ रख लेंगे तो आपको पता है 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई, सिराजुद्दौला डिफीट हो गया, उसमें मीर जाफर ने जो है वो बिट्रायल कर दिया। आपने फैक्ट्स तो सब जान दिए, लेकिन जब लिखने की बारी आई आंसर की, क्लियर, वहां आंसर आप नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए? आपको कंसेप्ट और कंटेक्स्ट पता ही नहीं है, आपको सिर्फ पता है क्या? कंटेंट। क्लियर? कंटेंट से आप कितना आंसर लिख लेंगे? और क्वेश्चन भी यूपीएससी बिलीव मी आपको ऐसे नहीं देगी कि आप सीधे कंटेंट लिख लो। क्लियर? दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 10th एंड 12th एग्जामिनेशन। क्लियर? यूपीएससी चाहती है आप क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से उसको समझें, जैसा मैम कह रही थी, क्रिटिकली एनालाइज करें। क्लियर? और तब आप आंसर लिख पाएंगे। वो तब आएगा when you will start looking into concept and context. Clear? लेकिन hard reality, I'm telling you, 90% of the candidates, they run after only one thing, and this is content. Clear? It will lead you nowhere. Clear? यूपीएससी को कोई विकीपीडिया नहीं चाहिए, यूपीएससी को ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए कि मैं बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। उनको एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो चीजों की समझ रखता है। क्लियर? आप जब कंटेक्स्ट से समझेंगे तो आप ये समझेंगे हिस्ट्री से आप क्या सीख पाते हैं। क्लियर? बहुत सारे रूलर्स आए, बहुत सारे रूलर्स चले गए, आपने क्या सीखा? What lessons have you learned? Clear? This will become only when you emphasize on concept and context. ये कैसे आएगा? Clear? First important thing is it will come by reading basic textbooks. Clear? Like NCERT, read NCERT. आपकी क्लास ट्रू होने में 21st से स्टार्ट है, आप अभी से थोड़ी एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू कीजिए। क्लियर? एनसीईआरटीज विल गिव यू बैकग्राउंड, थोड़ा सोचिए, थोड़ा उस पर कंटेक्स्ट लाइए। क्लियर? और जब आप क्लास में आएंगे तो अपार्ट फ्रॉम कवरिंग टॉपिक्स देयर विल बी रेगुलर टेस्ट आल्सो। क्लियर? टेस्ट को लिखिए, लिखने का अभ्यास अभी से कीजिए, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस विल गिव यू एन एज। क्लियर? और जब ये प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा करेंगे, क्लियर, राइटिंग प्रैक्टिस, क्लियर, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यू हैव एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब ऐसा प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे आपको खुद ही एक कॉन्फिडेंस फील होएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी ये काम कर सकते हैं। क्लियर? दिस कम्स अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। क्लियर? सो यहाँ पर रेगुलर टेस्ट भी कराए जाते हैं, रेगुलर लिखने की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, इवैल्यूएटेड आंसर्स भी दी जाएंगे, मेंटर्स आपके साथ हमेशा होंगे, ही विल ऑलवेज गाइड यू कि आपको इंप्रूव कहां करना है। माय पॉइंट ऑफ हियर कमिंग हियर इज, क्लियर, डोंट रन आफ्टर द स्टूडेंट्स जो सब लोग कर रहे हैं। क्लियर? आप लोग सब बोलेंगे ये रख लो, स्पेक्ट्रम रख लो, ये रख लो, आप कितना रख सकते हैं? देयर इज नो लिमिट टू दिस। क्लियर? Point here is don't run after anything, don't go for that race. Clear? चीजों को समझिए, ध्यान से समझिए, बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़िए। स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन डायरेक्शन। डायरेक्शन गलत मत करिए कभी भी। स्पीड स्लो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी चीज कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, बहुत थॉरोली करिए, ताकि आपको वो चीज दोबारा ना करना पड़े। क्लियर? वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो। और उसको करने के लिए कंसेप्ट और कंटेक्स्ट पे ध्यान दीजिए। डोंट गो फॉर एनीथिंग एल्स। क्लियर? बिकॉज इससे क्या होगा कि आपको कभी भी वो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये मैंने एक सब्जेक्ट की बात की है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में। क्लियर? आप पहले इस चीज पर वर्कआउट करिए, इसको अच्छे से कर लीजिए, क्लास के साथ चलिए, आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड यू विल सेल थ्रू। क्लियर? डोंट गो आफ्टर द रैट रेस। जब लोग बोल रहे हैं रटना, कभी रटने की कोशिश मत कीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़िए, यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ रहिए, आपको खुद ब खुद सारी चीजों में फैसिलिटेट किया जाएगा। क्लियर? ये मेरी बात थी, यहाँ पे बाकी बात मैम ने खुद कह दी है आपसे। क्लियर? बाकी इस चीज को फॉलो कीजिए, आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। क्लियर? और कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ सवाल है आपके मन में?
आप पुरानी एनसीईआरटी कर लीजिए, नहीं भी कर सकते हैं, बट गो विद पुरानी एनसीईआरटी। हिस्ट्री की 11-12 की आती है, क्लियर। एंशिएंट इंडिया के लिए आदर्श शर्मा है, मिडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा है, मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा है। 3 किताबें कर लीजिए आप, पुरानी एनसीईआरटी आपको कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, राइटर है आदर्श शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा। इतना कॉपी कीजिए, यही काफी है। मैम जैसा बता रही थी, एसेंशियल्स ही करने का टाइम नहीं है तो उसके बियॉन्ड क्यों करेंगे आप, उसके बियॉन्ड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, क्लियर। 3 एनसीईआरटी करके रखिए, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम हियर एंड देयर, गलत चीज पर कभी हाथ मत डालिए, कभी मत पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूं, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड, ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्लियर। और टारगेट हमेशा रियलिस्टिक रखिए, एक्सिक्यूशन शुड बी ब्रूटल, क्लियर। जस्ट फॉलो दिस, रेस्ट वी विल टेक केयर ऑफ, क्लियर। ओके, सो सी यू देन वेरी सून, ठीक है। और आई विल टेक द एंटायर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर विद ऑल ऑफ यू, ओके। सो I think mic was not on. So now, with respect to these two papers, ethics and governance, UPSC deliberately has kept this particular paper in GS paper 4. This GS paper 4 ethics paper was included in which year? 2013. Between 2000 and 2010, various government reports have cited that various officers, those who have been selected by UPSC, they are good in various dimensions. But as far as administrative ethics is concerned, they are found weak. 2 days back also, if you have heard, how many of you are reading newspaper? You're reading? So you might have heard that 2 weeks back, 2 IAS officers from Haryana, they have caught in corruption charges. Yes. So now we are seeing that as far as administrative ethics is concerned, these officers are found weak. For example, under the Corruption Perception Index given by Transparency International, that is, India's rank has been degrading from 85th to 93rd to 96th. When I say this, that means as far as administrative ethics is concerned, they are found really weak. For example, one report says that in 2018, around 650 IAS officers had corruption charges against them. In 2019, around 750 IAS officers had corruption charges against them. And that is the purpose this particular topic, this particular subject has been included in your GS papers. Are you getting or not? So with respect to this topic, we'll be understanding how we should be acting. For example, what should be rightness and wrongness of human conduct. Yes, that is in order to achieve summum bonum, ultimate objective. How we should be acting when we are going into the administration. Now, if you will see the syllabus, they have divided the syllabus in such a manner that, for example, when you will be entering into the administration, it will have the practical aspects as well. Are you getting or not? When you are becoming IAS officer, how you should be acting, what is rightness and wrongness for you guys, that is very important aspect. When I talk about ethics, ethics is a normative science where we study human conduct on some established standard. Knowledge of ethics gives us knowledge of what we should do and what we should not, how these IAS officers should be acting through various case studies. These are practical cases through which we will be understanding in the ground how we should be behaving, how we should be acting. All those aspects we will be studying in this topic of ethics. In this topic, they have divided the syllabus into, for example, the UPSC has divided into 2 parts. First is what? Theory, and second part is case studies. Now, UPSC in theory portion, what they have done, they have tried to include various topics like ethics and human interface. They wanted to tell us what should be determinant for deciding right and wrong, what is ethics, and what should be goal. For example, summum bonum in case of Jainism is kaivalya, in case of Buddhism is nirvana, in case of Hinduism it is moksha, in case of governance it is welfare of citizens.
Yes, in case of governance, it is welfare of citizens. And it is being said that Atmanah Pratikulani Pareshamna Samachre. Do not do unto others as you would not be done by. And that is what essence of ethics is. When similar question was asked that how we should be acting and how we should not, from Maharishi Vedvyasa, it was replied that Paropkaraya Punyaya Papaya Parpidnam. That is, we should always do good to others. We should always help others. By that, it will be bringing us religious merit. If we are giving pain, hatred, or doing certain unjust act, it will be leading toward religious demerit. And what we have to achieve? Samam bonam, that is welfare of citizens. So first topic, first that is in the theory portions, we are dealing with those aspects, those values which are being required by these IAS officers. For example, values, for example, selflessness, honesty, objectivity, openness, leadership, integrity, accountability. All these values should be imbibed by these IAS officers. For example, we'll be dealing with, for example, suppose you are belonging from any kind of negative attitude. For example, you belong to certain areas where caste discrimination is there. Now you have to deal those cases while going into the administration. You cannot discriminate between caste then. So we'll be seeing that how these attitude can be changed. With respect to various case studies, we'll be understanding how these attitude could be changed. For example, third unit, they have given aptitude and foundational values for civil services. That clearly indicates that what are the values that should be imbibed by these IAS officers. In unit number 4, they are talking about emotional intelligence. Suppose, for example, one old aged lady comes to you and she is saying that I have lost all the document in the recent Kerala flood and my husband has died last month. I do not have any kind of document to produce to you, but I am really hungry. Will you at that particular time, will you eliminate her or will you tell her to get out from here because you are not having any kind of documents? No, you cannot do that. Yes, that is, you have to understand her emotion and your sole purpose is welfare of citizens. Yes, you will be calling to NGO, SHG, somebody, for example, you will be helping her. Your attitude should be helping her. You cannot deny any kind of services because she was not having any particular document. Are you getting or not? That is called as this aspect of understanding emotions of other, understanding your own emotions and then directing these emotions in a socially desirable behavior. It is called as emotional intelligence, dear friends. With respect to unit number 5, we will be understanding regarding various philosophers and thinkers. For example, Plato, Socrates, will be understanding regarding Aristotle, Descartes, Spinoza, Leibniz, all of these philosophers and their philosophies. And specifically in unit number 6 and 7, we will be understanding regarding these values, these practical aspects with respect to administration. And in case studies, if you will see, you will find that 6 case studies are being asked. And each of these case studies are of 20 marks. That means 6 into 20, it is how much? 120 marks case studies are being asked. And here 13 questions they are asking of 10 marker. That means 130 marks. Are you getting or not? Total how much? 250 marks. So this is how ethics has been divided. Now with respect to governance, if you understand the governance, then let's discuss the dynamics of governance as well. If you will see governance, this particular topic is really important for GS paper 2. Yes, very important for GS paper 2. But when you have seen ethics syllabus, there we have discussed regarding case studies. These are practical cases which you will be finding. For example, we just discussed one case study, yes, of the emotional intelligence. Now in those aspects, you have to know that how this government functions. Now this aspect, in this aspect of governance, we are understanding regarding government in action. Sarkar kuch kar rahi hai for the welfare of the people. When government comes into action to solve societal problem, that is called as governance. Yes, that is called as governance. This particular paper of governance is included in which paper? GS paper 2. GS paper 2 includes sir kitna kya kya? Polity, governance, social justice and IR. Are you getting or not? I will be dealing with this particular subject of governance and I am telling you that from this particular portions approximately at least 4 questions are being asked. 2 questions are of 10 marker and 2 questions are of 15 marker.
Now all of these questions will be coming from our class notes. Whatever classes we will be conducting, that are more than sufficient. That would be more than sufficient. Even you can see our testimonials with respect to whatever we teach in terms of, for example, in the YouTube as well, because various officers have been selected by learning all of these concepts. Are you getting or not? So with respect to governance, what is governance? Now basic idea I am giving to you all, that is what is governance? Government in action. Government has lot of authority, lot of power. They exercises various kind of power with respect to, for example, CVC, CBI, ED. Yes, when government comes into action, World Bank defines governance as how authority is being exercised. Yes, that is government exercising these powers. That is called as governance. Yes, 4 questions are being asked. Now, I have given brief about ethics and governance. You have got knack of what do you mean by ethics? That is giving code for rightness and wrongness of human conduct in order to achieve what? Summum bona. That is welfare of citizens. Welfare of citizen. And second aspect is what? Governance. Now, where we have to study? We have to study ethics in where? Governance. These two topics are interlinked. You are studying ethics, yes, knowing about what is right and wrong for me, then where you will be applying this? In governance aspect. In governance aspect. So this particular thing, we will be seeing the interlinkages aspect as well in our topic. Are you getting or not? And next, very, very important thing is this, that trust is a very, very important element here. See, we want you to put your best. Yes, Krishna says in Bhagavad Gita, Nayam lokasti na paro na sukham sanshayatma. For a doubting soul, there is no happiness neither in this world nor in other. There is no happiness neither in this world nor in other. And that is why when we are saying something to you, then you have to follow that. You have to follow that. And that is the shortest method that you could have imagined to reach to your goal. Otherwise, market is flooded with lot of distractions and lot of material. Krishna again says that aprapyam nam ne hasti dhirasya vyavasaina. Those who are fearless and those who are hardworking, for them everything is achievable. That means you have to put in your whole heart and soul with respect to your UPSC journey. And that is what, for what purpose you have come here. So with this, I am closing my class. Next is Rohit Bansal sir. He will be taking society and that would be last. And he is expert in that. He will be dealing with society section. So thank you everyone. We will be meeting in classes. Hi, good evening. So almost all has been said, so I won't take much time. What I would like to share is that in last few years, 2 sections of your GS paper 1 and 2, if you combine, they have come across as really important, because what has happened is that even if you make laws, but if you are going to implement them on ground, you should have some basic idea about how society differs. Say for example, we have a law, but that law has been made keeping in mind some urban population. But as an administrator, you will start somewhere in a village area, in some tier 2, tier 3 towns. So how to implement those things in that particular condition? For that, you must understand how Indian society operates. Say for example, today on books we have SC/ST Atrocities Act and all, but how much that gets implemented, that is a big question, because you also come from the society, you also come from that background. A lot of time bureaucratic neutrality keeps coming into question. Okay, so if you see the broad syllabus is UPSC has just given the pointers, but they keep asking question diving deep into it. Say for example, they have given this topic population and associated issues. Got it? Now every choice or every second year they will pick one question on population. See, last year they asked that what do you understand by demographic winter? Okay, now this term is not given anywhere even in your NCRTs and all.
but if you take a logical guess, it obviously is pointing towards a direction. Winter में क्या होता है generally? एक तो white color, you can compare it with snow. Secondly, generally winters में you try to or winters में you try to look for protection. ठीक है, प्रोटेक्ट कौन करता है जनरली पॉपुलेशन में? ईदर जो कि वर्किंग पॉपुलेशन हो. Now when we are talking about demographic winter, logically it says that many old people are living in a particular area, or for that matter not new young generation is not coming up much. तो जो demographic profile है वो कहीं ना कहीं it is moving towards aging and all. So like this term might have come across Hindu या Indian Express में कभी आ गया होगा, and based on that they made a question. So ऐसी situation में you have to take a logical guess. Now if इसी से हम सोचें कि in future 2-3 years down the line they can ask you a new question on population, they can ask you what do you know by demographic silver. ठीक है, अब demographic silver logically देखोगे तो silver क्या होता है? The one thing you are getting in inheritance maybe. ठीक है, now when we talk about demographic silver, it basically says that how today because of economic crisis, because of societal crisis, youngster the youth is still dependent on their parents for their day to day activities. बहुत साल तक हम कमा नहीं रहे होते हैं, तो जो फैमिली का सिल्वर है वही चल रहा है. तो मोर एजेड पीपल आर सस्टेनिंग द इकोनॉमिक साइकिल ऑफ अ सोसाइटी बिकॉज ऑफ देयर सेविंग्स एंड ऑल. तो उसके बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं. तो इफ यू सी लास्ट ईयर एक और था मेल, last year only they asked some 15 questions on it. क्या करते हैं, उनको बुलाइएगा. एक मेल और है, एक और पीडीएफ था ना क्वेश्चन बैंक. So last year they asked some 12 questions including your society and social justice. उससे पहले भी they have been asking around 8-9 questions if you include society. Social justice is part of your GS paper 2, but if you combine them and also you don't study these two papers in isolation, क्योंकि जैसे मान लो they have talked about say women and all, ठीक है, वो पेपर 1 में इंक्लूड किया है, but then in paper 2 they are expecting you to know policies on the vulnerable group. तो you can't do these two topics separately, आपको साथ में ही करना पड़ेगा. ठीक है, सी 2024 के क्वेश्चंस हैं ये. इफ यू इंक्लूड सोशल जस्टिस almost 12 questions are there, and this is a chunk which is a very low hanging fruit. आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है इसमें. You just have to be aware enough to keep picking issues from your newspapers. Any newspaper would do. And apart from that, आपकी जो NCERTs होती हैं, we do society very detail in NCERTs. But apart from that also when we take classes, बहुत ज़्यादा contemporary notes होता है. Like we try to include lot of articles which keep coming in Hindu. ठीक है, तो notes भी बदल जाएंगे पूरे. Just focus on that. Say they are asking question that this what is regional disparity, how does it differ from diversity and all. अब diversity topic is given in your NCERT and they have very well explained the difference between regional disparity and diversity, but we are not in the habit of reading NCERTs and all. Got it? So my idea is, I won't take much time, that start looking from the perspective of society and social justice whatever you read in your newspapers. That will help you to gather the broad idea that what kind of questions are being asked, और आप खुद ही frame कर सकते हो questions. Got it? चलिए, thank you. This was from my side. I think Subhanshu will conclude. Hello. Thank you, sir. So, how was the experience of knowing all these aspects of UPSC preparation, GS particularly? You have interacted with most of the teachers, history, polity, geography, science, and society, ethics, governance also. Alright, I'll not take much of your time. About the course, I have already told you. This course is available in the two modes. One is the hybrid, and in hybrid mode, basically you will have the access to classroom, and you'll also get the tablet in which you can watch lectures. Fine. The other mode is online only mode.
in which you will get the tablet and you have to watch the lectures on that tablet only. The course is valid till mains of 2026. So you all are going to appear in 2026. आपके ईयर के मेंस तक के ये लेक्चर्स वैलिड रहेंगे, शो होंगे. हाउ मेनी टाइम्स कैन यू वॉच दीज लेक्चर्स? यू कैन वॉच इट थ्राइस. ओके, 3 बार आप इनकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं और एक बार जब 5 से 7:30 लाइव चल रहा होगा आप तब देख सकते हैं. ठीक है. हाउ आर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कनेक्ट टू द टीचर्स? सो व्हाट डू वी डू? आफ्टर completion of the class we conduct the Zoom sessions. So the link for this Zoom session will be shared on your Telegram group. Every day you can interact with the teacher and you can ask the questions there. Offline students, needless to say, you can ask the question right in the class or after the class. Right? These are the generic features of this particular course. And as you know that the course, this GS Foundation only, the hybrid mode course is available at 85,000 and the online mode course is available at 60,000. So all of you can who have attended this workshop, and I'm very sure that you are a bit confident now that this course is going to help you in this preparation. You can start enrolling, and if in case you want to discuss more, you want to interact with mentor, or you want to know more about the technical details of the course, you can ask the questions in the reception. Online students, you have, there's this number given on your comment section which is our IVR number. You can call on that number and ask your individual doubts. How to subscribe? Offline, you can go to reception, get information and enroll from there. Online students, you can directly visit our website www.shubhraranjan.com. In that, choose recommended courses. Okay. Fine. So just need to visit the website shubhraranjan.com. In that, open this recommended courses tablet. Fine. General studies courses, GS foundation course. Fine. इसमें आकर you can find your course as per your need. So this is the mains classroom course. Here it is written classroom, but it is actually hybrid, because in this you will get access to both classroom and tablet. Now this is GS Prelim cum mains tablet course. Right. Apart from the mode of the course, the basic features of these two courses are same. Right. So you can fill your details, read it once before enrolling, read all the terms and conditions, etc., and then you can enroll from here. Right. So I hope this session was helpful today. If any in the upcoming days, if you feel that you want to connect to our mentors, teachers, feel free to visit our institute. If your friends want to consult, they can also consult our mentors or teachers. You just need to inform them that they have to contact Shubhanshu. My name is Shubhanshu and I am GS coordinator here. So they can connect to me and I'll connect with them. I'll connect the aspirant to the right point of contact. You have got one feedback form. Just fill few details in that, basically your name, contact, and the courses you are interested in, and then you can give your feedback, whatever your experience has been in today's workshop. So we are ending the session here. Thank you so very much once again on behalf of Shubhra Ranjan IS Study. We wish you all the very best for this exam preparation. Thank you.